Hello everyone, I am Alyan Fiverrwala and today I have the privilege of conducting an insightful interview with Mr. Nanda, the founder and CEO and chairman of Horizon Lanka Foundation Sri Lanka. Let's dive into Mr. Man's journey and learn more about the incredible work he doing empower communities through education and innovation. So, hello sir, how are you? I'm fine. I'm fine. Thank you very much, Aryan. Okay, so first of all, thank you so much for coming and giving me your time. Thank you so much for coming. Welcome. Okay. So before moving on a question, can you please introduce yourself? Yeah. Can you repeat the question? I don't hear you that well. Something is wrong, I guess. I said before moving on a question, can you please also introduce yourself? Well, I'm Nanda Wanninayaka. I'm 51 years old now. I come from a distant village, a rural village. This is called the name of the district is Anuradhapura. This is the first the kingdom of Sri Lanka. The capital is was Anuradhapura, and I live like 50 kilometers away from this district capital, uh, and I have humble backgrounds. Like my both my parents were farmers, and we had 9 children in the family. Luckily, our parents educated all of us. Not even rich people could afford to do that, but thanks to them, all the family members could gain some education. Yeah, that's it. Okay, thank you so much for this introduction. So my first question is, can you tell us about your journey and what inspired you to start Horizon Lanka Foundation? Well, uh, I didn't have any idea of making this a foundation or making it a formal body. Maybe I was an English teacher. I taught in a public school in the village, and well, while teaching in the public school, I had some challenges from the public school because I needed more freedom to teach my students, and what I wanted, like using sounds, and I wanted children to play, to do sports, to dance, sing. For such things, the environment in school wasn't that conducive because yeah, the teachers and the principal, they were sort of old-fashioned. So I tried my best within the school, but I felt that I needed more freedom, and students deserved more opportunities. So I quit school and started teaching the kids under a huge mango tree in my garden. So there we didn't have any facilities, but students kept coming, and then it was an upward journey. So this virtually started under a tree in my garden. Yeah, we started with less than 10 students, but later the number of students went up more than 500. Yeah, All that's it. right. Okay. So could you describe some of the key initiative and project that Horizon Lanka Foundation is currently involved in? Well, we had some issues with the economic crisis in Sri Lanka last year. So
our journey was disturbed, and uh, anyway, I never wanted to stop any of the work I do. So we rented a house and now moved here, and we want to get more students. And we basically teach English, and we want to make this garden. This garden is like 1 acre in size, and then we want to get like computers, furniture, and other services, and make the garden beautiful. To start growing vegetables and fruits. That is our present project. And once that is completed, at least once that comes up to a stage that we are comfortable with, we are happy with, then we want to buy another our own plot of land so that we can have our dream horizon institute there. At the moment, this is a house we have converted to Horizon Academy. Yes, Ali? All right. So, how has the Horizon Lanka Foundation impacted the life of individual and community in Sri Lanka? Yeah, can you repeat the question? When you talk, I get some disturbances. I don't know whether you can hear me well. Okay. Okay. So, what challenges have you faced while running a non-profit organization in Sri Lanka? Well, the main challenge is uh, attitude of people. When we started this, there was a war in Sri Lanka. So there was some non-government organizations that sometimes help the terrorists, and there was a negative publicity to non-government organizations. So I didn't want to get my name or that of the organization tarnished with such organization. So we had to register Horizon Lanka as a private limited liability company. So we won't get that negative name. That doesn't mean that all the NGOs were involved in such activities, but there was a risk. So that was the number one challenge during the wartime. Uh, and the attitude of the people. Horizon uh, believed in technology right from the beginning. So people were not that open for technology. People didn't know what the internet was. They didn't know about computers because my village is a very rural village. So we had to uh, work hard to uh, let the people know that we are doing something positive to change their lives with English language and new technology. Those are the main challenges, and also sometimes not from all parties, but some of the sometimes it became some organizations, sometimes some individuals in very high positions. Also, they also
sort of made my life miserable by blocking me getting to this field for the simple reason that I don't come from a big school in Sri Lanka, and I don't have a degree in IT, university degree, and due to such minute things, a few people didn't want me to come to the limelight. I never went for publicity, but all this happened spontaneously due to the work we did. And, those were the biggest challenges, not war. War didn't harm us. Nobody targeted us. But, we lived in a village, my own village, very close to the war zone. But nothing happened for us from the terrorists or the Sri Lankan forces. In fact, the Sri Lankan forces and the police department, they protected us, they helped us, but it was mostly with some of the vicious people and a couple of vicious commercial companies and organizations, but mostly we had more people helping us, appreciating us than making barriers. Yes, Alyan? Okay, that's great. All right. So, can you share some success stories or memorable moments from your work with Horizon Lanka Foundation? Well, uh, one is getting the first volunteer teacher to Horizon Lanka Foundation. That happened in 2004. And she was a British girl, and she helped me a lot to write funding proposals, and she was a young woman, so the students liked her a lot, and she was very kind as well. And after that, we got a lot of volunteers, foreign volunteers. By now, we have got more than 500 foreign volunteers since then. That's a huge number when compared to the other organizations in Sri Lanka. And another achievement was uh, earlier the students in the village uh, mostly failed English, but after we started Horizon Academy, more students got A passes or B passes. In fact, some of the students got higher passes for English than for their mother tongue, their own language. And then Intel Corporation chairman, Intel USA chairman, Dr. Craig Barrett, while he was doing this world tour, he came to Sri Lanka as well. So Intel wanted to interview some of the students. कभी मैंने ये दुआ नहीं करी मेरा बेटा बड़ा आदमी बन जाए या अमीर बन जाए, बस यही थी अल्लाह मियाँ इनको नेक बना दे, यही दुआ करती थी मैं। जंजीरें अब तोड़ देंगे, तरक्की से रिश्ता जोड़ देंगे।
गुलामी अब छोड़ दे। साथ है हमारे बड़े दिल वाला, मुश्किलों से जिसने निकाला, गिरते हुओं को फिर से संभाला, वो है रेहान अल्लाह वाला। किया हर मैदान फतह, किया हर मैदान फतह, किया उसने सबको जमा, किया उसने सबको जमा, वो है रेहान अल्लाह वाला, वो है रेहान अल्लाह वाला। गूगल से वेरीफाई करेंगे, यूट्यूब से सब कुछ सीखेंगे, फेसबुक से फैलाएंगे और ट्विटर से सबको बताएंगे। कर रूठ गई है तकदीरें और टूट गई है शमशीरें, मोबाइल है अब अपना निशान, अब काम करेंगी तदबीरें। हमारे सारे के सारे लोग पढ़ना लिखना, अपने इल्म को हासिल करना, और जो कोई वो आमदनी कमाते हैं उसको ज़्यादा कमाना शुरू कर दें। ज़्यादा कब कमाएंगे? ज़्यादा वो जब कमाएंगे जब उनके पास वो एक खिलौना होगा जिसको हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, और उस खिलौने के ऊपर जाकर वो लिखेंगे कि मैं ये काम करता हूँ, मैं इसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ। वो लिखेंगे कि मैं ये सीखना चाहता हूँ, मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। वो लिखेंगे कि मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ अपनी फील्ड का, मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए हमें हर पाकिस्तानी के हाथ में एक अदद ये खिलौना पहुँचाना है। आज पाकिस्तान के 150 मिलियन लोगों के पास ये खिलौना नहीं पहुँचा है। मैं आपसे मदद चाहता हूँ कि आप मदद करें और ये खिलौना सबके हाथ में पहुँचाएं। हमारे बड़े दिल वाला, मुश्किलों से जिसने निकाला, गिरते हुओं को फिर से संभाला, वो है रेहान अल्लाह वाला। किया हर मैदान फतह, किया हर मैदान फतह, किया उसने सबको जमा, किया उसने सबको जमा, वो है रेहान अल्लाह वाला, वो है रेहान अल्लाह वाला। कहने को हम जर्रा थे पर अब लोहे का छर्रा है, गर्दिशों को हम तोड़ देंगे, शर्माना अब छोड़ देंगे। नए जमाने नए दौर से रिश्ता अपना जोड़कर ढूंढेंगे अपनी मंजिल, ना दुखेगा अब किसी का दिल। किया हर मैदान फतह, किया हर मैदान फतह, किया उसने सबको जमा, किया उसने सबको जमा, वो है रेहान अल्लाह वाला, वो है रेहान अल्लाह वाला। गूगल से वेरीफाई करेंगे, यूट्यूब से सब कुछ सीखेंगे, फेसबुक से फैलाएंगे और ट्विटर से। 2 years completed at Rehan Foundation. Journey of Mahtab Khan Tanauli. संजीरें अब तोड़ देंगे, तरक्की से रिश्ता जोड़ देंगे। जॉब के पट्टे से आजादी, गुलामी अब छोड़ दे। साथ है हमारे बड़े दिल वाला, मुश्किलों से जिसने निकाला, गिरते हुओं को फिर से संभाला, वो है रेहान अल्लाह वाला। किया हर मैदान फतह, किया हर मैदान फतह, किया उसने सबको जमा, किया उसने सबको जमा, वो है रेहान अल्लाह वाला, वो है रेहान अल्लाह वाला। गूगल से वेरीफाई करेंगे, यूट्यूब से सब कुछ सीखेंगे, फेसबुक से फैलाएंगे और ट्विटर से सबको बताएंगे। कर रूठ गई है
मोबाइल है अब अपना निशान, अब काम करेंगी तदबीरें। हमारे सारे के सारे लोग पढ़ना लिखना, अपने इल्म को हासिल करना, और जो कोई वो आमदनी कमाते हैं उसको ज़्यादा कमाना शुरू कर दें। ज़्यादा कब कमाएंगे? ज़्यादा वो जब कमाएंगे जब उनके पास वो एक खिलौना होगा जिसको हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, और उस खिलौने के ऊपर जाकर वो लिखेंगे कि मैं ये काम करता हूँ, मैं इसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ। वो लिखेंगे कि मैं ये सीखना चाहता हूँ, मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। वो लिखेंगे कि मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ अपनी फील्ड का, मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए हमें हर पाकिस्तानी के हाथ में एक अदद ये खिलौना पहुँचाना है। आज पाकिस्तान के 150 मिलियन लोगों के पास ये खिलौना नहीं पहुँचा है। मैं आपसे मदद चाहता हूँ कि आप मदद करें और ये खिलौना सबके हाथ में पहुँचाएं। हमारे बड़े दिल वाला, मुश्किलों से जिसने निकाला, गिरते हुओं को फिर से संभाला, वो है रेहान अल्लाह वाला। किया हर मैदान फतह, किया हर मैदान फतह, किया उसने सबको जमा, किया उसने सबको जमा, वो है रेहान अल्लाह वाला, वो है रेहान अल्लाह वाला। कहने को हम जर्रा थे पर अब लोहे का छर्रा है, गर्दिशों को हम तोड़ देंगे, शर्माना अब छोड़ देंगे। नए जमाने नए दौर से रिश्ता अपना जोड़कर ढूंढेंगे अपनी मंजिल, ना दुखेगा अब किसी का दिल। किया हर मैदान फतह, किया हर मैदान फतह, किया उसने सबको जमा, किया उसने सबको जमा, वो है रेहान अल्लाह वाला, वो है रेहान अल्लाह वाला। गूगल से वेरीफाई करेंगे, यूट्यूब से सब कुछ सीखेंगे, फेसबुक से फैलाएंगे और ट्विटर से सबको बताएंगे। साथ है हमारे बड़े दिल वाला, मुश्किलों से जिसने निकाला, गिरते हुओं को फिर से संभाला, वो है रेहान अल्लाह वाला। किया हर मैदान फतह, किया हर मैदान फतह, किया उसने सबको जमा, किया उसने सबको जमा, वो है रेहान अल्लाह वाला, वो है रेहान अल्लाह वाला, वो है रेहान। कभी मैंने ये दुआ नहीं करी मेरा बेटा बड़ा आदमी बन जाए या अमीर बन जाए, बस यही थी अल्लाह मियाँ इनको नेक बना दें, यही दुआ करती थी मैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान नंबर 1 कंट्री बनने वाला है फ्रीलांसिंग के अंदर। अब कौन है इसके पीछे? यही पागल। मुझे लगता है ऐसा है कि रेहान भाई की जो है चाहते हैं कि सब दुनिया में अच्छे हो जाए सारे, कोई दुनिया में बुरा इंसान बचे ही ना। The time, that's the moment when we start thinking, when we start to go deeper, and that's the place I believe he wants us to be creative. कभी कभी मेरी सास भी कहती है, मैं भी ये कहती हूँ कि मेरे मियाँ ना मोहम्मद बिन तुगलक है। टाइम से पहले उन्होंने कुछ चीज़ें नाफिज करी थी और लोग समझ नहीं पाए थे। ऐसी चीज़ें लाते हैं कि फिर उस वक्त तो लगता है कि कैसे, पर फिर वो होता है। लेकिन ये इतने बहादुर इंसान है, ये अल्लाह पे भरोसा करके लगे रहते हैं। रेहान अल्लाह वाला, जिसके साथ अल्लाह की एक मोहब्बत ताल्लुक है, अल्लाह का करम उस पर क्यों नहीं होगा। वो बगैर किसी अपने ज़ाती लालच के लोगों को कनेक्ट करवाते हैं, और वो जहाँ समझते हैं कि इस बंदे से हमारे लोगों को, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो उनको आगे करते हैं।